Hi guys, welcome to Citizen Mentors. My name is Ketan. Today I'm going to talk about IIM Indore का final placement for a batch of 1921. So when you talk about this, right? Basically summers के बारे में अगर बात करेंगे, summers का feedback मुझे इतना कुछ खास नहीं आया है IIM Indore का. Summers के लिए मेरे ख्याल से they are struggling little bit. But let's have a look at the final placement. Before we move ahead, let's understand the जेंडर डाइवर्सिटी. अब ये जेंडर डाइवर्सिटी, आई मीन व्हेनेवर यू टॉक अबाउट IIM इंदौर, एक कुछ अच्छा फील नहीं आता बिकॉज कैट 20 इन लोगों ने सेटअप करा था एंड वी नो इट वाज बिजार. एंड जहां तक बात है जेंडर डाइवर्सिटी का, तो यू नो लॉट ऑफ पीपल सेड दैट नॉन इंजीनियर्स के लिए पेपर अच्छा होगा बिकॉज ये लोग नॉन इंजीनियर को फेवर करते हैं, जेंडर डाइवर्सिटी ये लोग फेवर करते हैं एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला लाइक स्टफ. बट या आई थिंक ऑल दैट दोस वर द फेक थिंग्स just to motivate students in a fake way. ऐसा कुछ हुआ नहीं, and at the end of the day it was pretty disappointing. Anyway, let's move ahead, right? Life has to move on. Moving ahead, अगर बात करेंगे नॉन इंजीनियर या फिर जेंडर डाइवर्सिटी के बारे में अगर बात करेंगे, फीमेल 40%, मेल 60%, फिर भी मुझे लगता है IIM कोड यहाँ पे थोड़ा सा बेटर है बिकॉज वहाँ पे नंबर ऑफ वहाँ का रेशो बेटर है, फीमेल टू मेल का रेशो वहाँ पे बेटर है. अगर मैं एकेडमिक डाइवर्सिटी के बारे में बात करूँ, अगेन यार ये इंजीनियरिंग डोमिनेटेड है. अगर आप देखोगे नॉन इंजीनियर्स यहाँ पे बहुत आपको कम दिखाई देंगे, बट अगेन 15 से 20% नॉन इंजीनियर्स हम यहाँ पे पकड़ सकते हैं. सो अगेन इंजीनियर से डोमिनेटेड है डेफिनेटली IITs and IITs बिट्स एंड ऑल. सो यू कैन थिंक अबाउट IIM इंदौर. आई मीन अगेन ब्लैकी में वैसा ही होता है. इट्स जस्ट दैट मेरे ख्याल से IIM अहमदाबाद इज दी only college in Blackie which has 33% non-engineers. बाकी most of the colleges में this is what you'll be seeing 15 से 20% non-engineers. So that's common across Blackie except IIM Ahmedabad. So again, as an engineer, you can definitely have a little advantage out here. At the same time, every coin has two sides. So even if you look at if you're a commerce guy or a finance or economic honors something like that, you can still have a good chance to make it to IIM Indore. Moving ahead, अगर हम work X के बारे में बात करेंगे, अगर हम batch profile के बारे में बात करेंगे, so yeah, the good thing is that I think they are maintaining a ratio of 50-50. 50% people who are with the work X, 50% people are freshers, something like that. And जहाँ तक बात है premier institutes के बारे में, so they're saying that 41% बच्चा लोग are coming from the premier institutes like IITs and NITs and BITS and all that stuff. I would have really appreciated if they had actually included let's say SRCC, symbiosis or colleges which are coming under Mumbai University or Calcutta University or DU for that matter, because again these are the supreme colleges when you talk about the non-engineering area. Now if you look at the WorkX, okay, so WorkX के बारे में maximum chunk is 1 to 2 years. The second one is basically less than 1 year. So freshers भी यहाँ पे अच्छे खासे हैं. तो जो freshers है उनको लगता है कि हमारा Blackie कभी हो नहीं पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. There are a lot of freshers in Blackie also. So remember that Blackie का मतलब IIM Bangalore, Lucknow, Ahmedabad, Calcutta, Kozhikode and Indore. अगर मैं बात करूँ 3 से 4 साल के जो WorkX वाले हैं वो 16% है. More than 4 years is just 12%. 2 to 3 years is also 12%, and that is what brings 22 months का एवरेज WorkX. ये ज्यादा भी नहीं है और ये कम भी नहीं है. आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड थिंग अबाउट IIM इंदौर कि इनका एवरेज WorkX इज प्रीटी मच बैलेंस्ड एक्चुअली. सो एक जमाना था, आई रिमेंबर IIM इंदौर हैड इट्स ग्लोरियस टाइम पीरियड जहाँ पे लॉट ऑफ WorkX पीपल एक्चुअली वांटेड टू गो एंड जॉइन IIM इंदौर because they were really good as far as the placement is concerned and the the exposure was concerned. Again earlier अगर हम देखेंगे तो it was Lucknow, Indore and Kozhikode, but now it's Lucknow, Kozhikode and Indore. So that's the thing. जब हम बात करते हैं यहाँ पे WorkX के डोमेन के बारे में, आई एम वेरी श्योर IT एंड इंजीनियरिंग से ये डोमिनेटेड होगा. कंसल्टिंग वही होता है तुम्हारा IT ITS वाला कंसल्टिंग होता है जब स्टूडेंट्स बिट्स वगैरह से आते हैं, IIT वगैरह से आते हैं, दे जॉइन इन द कंपनीज वेयरिंग दे गो फॉर द IT sort of a consulting. So that's what we are looking at. BFSI is still good. Students who are the non-engineers, like those who are coming out of SRCC, symbiosis sort of colleges, वहाँ पे उनको एक एडवांटेज मिल जाता है. दूसरी बात, कुछ बच्चे होते हैं IITs में जिनका फाइनेंस भी sort of a specialization होता है, so they also opt for some sort of a BFSI role, तो वो भी यहाँ पे include हुआ होगा. But again, it's a balanced thing. It is not very much extreme. Looks good as far as the batch profile is concerned. Final placement के बारे में अगर हम बात करेंगे, so around about 40 new companies came on campus. This is a pretty good number, even looking at the time period of like COVID. It's a great number. 100 बच्चों को अगर आप देखोगे, average package is 33 lakh per annum. This is a good one, but could have been a little bit more better. Average salary is around about 23.6 lakhs per annum. Highest domestic is 41.5, and if you talk about highest international salary is around about 56.8 lakhs per annum. Now average salary के बारे में बात करेंगे, so they have done a great job as far as the average salary is concerned. But again,
मेरे ख्याल से this is getting better year on year. Highest domestic is 41. This is less than the Kozhikode, if I'm not wrong, and highest international salary is 56.8 lakhs. So we will have a quick look at इसका पूरे 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, अदर 4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड. So it's a great jump from 18.17 lakhs to 23.6 lakh. So if you're somebody who is actually considering, let's say Blackie, if you want to join in Indore, you can think of joining Indore because there is a good sign, there is a sign of growth. So this is something you can think of, because अगर आप देखोगे 2020 का इनका average package was 22.92 and then you have round about 2021, so there is a significant amount of growth. अगर मैं ये दो चीजें कंपेयर करूँ, अगर ये मैं 2 साल कंपेयर करूँ, and if I look at these 2 years, so there is a significant amount of growth actually out here, which is again a good sign. Now if you talk about the domain wise offers, you will be seeing that surprisingly it's dominated by finance, consulting, sales and marketing is also close by. IT analytics is 11% and Genman and operations is around about 20%. So again, like you can take a call कि ठीक है, अगर मुझे finance करना है या फिर consult में चलना है, fin में चलना है, S&M में चलना है, Indore is going to be one of the best option. But again, when you talk about Blackie में आप कुछ भी पिकअप करो, मेरे ख्याल से वो बेस्ट ही होने वाला है. जैसे कोझिकोड के बारे में अगर हम बात करें तो S&M इज रियली गुड, कंसल्ट इज रियली गुड. लखनऊ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वहां पे फिन इज अमेजिंगली गुड, राइट? सो दैट्स हाउ पीपल एक्चुअली डिफरेंशिएट KLI, बिकॉज ABC में तो वी आर सॉर्टेड कहाँ चलना है. KLI में थोड़ा सा देखना पड़ता है. इनका हाईएस्ट पैकेज भी अगर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर ये ग्रो हो ही रहा है. सो दैट्स द गुड नंबर. आई वुड से could have done little bit much better because Indore is a pretty old brand and मेरे ख्याल से कोझिकोड बहुत अच्छा टफ फाइट दे रहा है फिलहाल. If you talk about roles, again Blackie में मोस्टली अगर मैं KL के बारे में बात करूँ, रोल्स थोड़े बहुत सेम ही होते हैं, क्वालिटी उसकी सेम ही होती है. बात होती है क्वांटिटी की कि कितना बच्चों को ये रोल मिला है. और एक्चुअली ये क्वांटिटी ये लोग डिस्क्लोज नहीं करते. मुझे लगता है कि एक्चुअली ये डिस्क्लोज करना चाहिए कितने बच्चों को एक्चुअली IB में फ्रंट एंड का रोल मिला है, कितने बच्चों को PE या फिर VC का रोल मिला है. आई थिंक ये थोड़ा डिस्क्लोज करना चाहिए ताकि जो फ्यूचर एस्पायरेंट है उनको एटलीस्ट एक आइडिया मिले कि कितना परसेंट बैच जो है वो एक्चुअली PE और VC में चलता है. अभी ये फाइनेंस बोलते हैं 23%, 24%, इसमें तो हर एक चीज आएगी. सो दैट इज नॉट गोना हेल्प मी एज अ स्टूडेंट टू काइंड ऑफ डिसाइड. तो अगर आप ब्रेकअप दोगे एज अ कॉलेज, बिकॉज इनके जो प्लेसमेंट रिपोर्ट्स होते हैं वो एनीवे ऑडिटेड होते हैं, तो मेरे ख्याल से अगर वो ब्रेकअप यहाँ पे अगर आ जाता है ना, then life would have been a little bit much better. अगर आप देखोगे मार्केटिंग फाइनेंस में, you will have finance में Bank of America, you will have every company coming out here, Goldman, BofA, Deutsche, you will have, you've got ICICI, Axis. Same to talk about companies who are coming for the consulting domain. Consult के लिए भी you will have Bain and Company, you will have McKinsey, you will have BCG, Deloitte and G and all that sort of companies coming around. So when you talk about companies, KIL में या फिर ABC में आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखता है. कंपनीज आपको उतनी ही दिखेगी. It's just that मुझे लगता है कि थोड़ा क्वालिटी तो डेफिनेटली क्वालिटी है, थोड़ा क्वांटिटी बता देते तो इट वुड हैव बीन मच बेटर. जेनमैन के लिए और प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए अगर हम देखेंगे, सेम रिक्रूटर्स है, अमेरिकन एक्सप्रेस, जेनपैक, सेल्सफोर्स, विप्रो, यस बैंक. ये आपको कोझिकोड और लखनऊ में भी दिखने वाले, नो डाउट अबाउट इट. ई कॉमर्स तो शॉर्ट आपको पता ही है, अमेजॉन होगा, फ्लिपकार्ट होगा, उड़ान होगा, राइट? सो दीज आर द कंपनीज ऑन द कैंपस, बट ओवरऑल कॉलेज हैज डन अ गुड जॉब मेरे ख्याल से. Again, IIM Indore, one of the strong brand in the country, can do much better in the coming years. So guys, I hope you understood and you like this review. I'll be making a couple of more videos on the placements. Stay tuned to my channel. If not subscribed, kindly subscribe and stay tuned to City Mentors. That's it from my side, guys. Thank you so much for watching this video. Bye-bye.